एष रेडियो नेपालः सम्प्रति समाचारः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः ध्रुव भट्टराई। प्रधानमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रस्य अध्यक्षस्य पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भाषते सर्वकारस्य विरुद्धे विभिन्न रूपेण दुष्प्रचारं विधाय जनतां भ्रान्तां विधातुं षड्यन्त्रं जायमानं वर्तते। प्रेस सेन्टर नेपालस्य पदाधिकारिणां तृतीयं पूर्णोपवेशं काष्ठमण्डपे पूर्वेद्युः सम्बोधयन् असौ अवोचत् असत्य प्रचारस्य निरोधनं जनताय यथार्थ सूचना प्रदानं च संचार क्षेत्रस्य महत्वपूर्णं दायित्वं वर्तते। पश्चात्तन समये संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य अरोचकतत्वेन सर्वकारस्य एतस्य नेतृत्वस्य च विरुद्धे अनर्गलः कपोलकल्पितः असत्यश्च प्रचार विद्यमान स्थिति भाषमाण प्रधानमन्त्री प्रचण्डः भ्रामक सूचनाय विरुद्धे सत्य सूचनां प्रदाय प्रतिबद्धितुम् अनुरुणत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नैज क्षेत्रस्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायकस्य एन्सेल संस्थानस्य अंशभागिताया क्रयण विक्रयणयोः सम्बन्धे आत्मना संयुक्त अरब इमिरेट्स देशे आयोजिते जलवायु सम्मेलने सहभागिताक्रमे ज्ञातम् एवं तत्सम्बन्धे तत्कालम् अध्येतुं सम्बद्ध निकाय निर्दिष्टः इति अकथयत्। भिन्न प्रसंगे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अवदत् वर्तमानं सत्ता गठबन्धनं पूर्णावधिं यावत् तिष्ठति। असौ वर्षेकं समीक्षा आगामी वर्षाणां कृते नवीन रणनीत्या अग्रे वर्ध्यते इति प्रतिबद्धतां दुरावर्तयत्। गतदिने एव नेकपा माओवादी केन्द्रेण काष्ठमण्डपस्य गोकर्णेश्वर स्थाने आयोजिते कार्यक्रमे प्रधानमन्त्री प्रचण्डः सर्वकारेण प्रारब्धानि जनपक्षीय कार्याणि विलोक्य विरोधिन छलकपटयोः षड्यन्त्रे सक्रिय सन्तीति टिप्पणीम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वकारेण सामाजिक न्यायस्य सुशासनस्य समृद्धे अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिश्च क्षेत्रेषु शोभन कार्याणाम् अग्रेसारणम् अनु व्यवस्था विरोधिनी शक्ति भीतेति अतर्कयत्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अभासत गणतन्त्रस्य विकल्प निरङ्कुशतन्त्रं भवितुं न शक्नोति। आगामिनो वैशाख मासस्य नवम दशम दिवसौ काष्ठमण्डपे आयोक्ष्यमाणस्य तृतीय निवेशन सम्मेलनस्य विषय विकास सहकारीभिः विमृष्टं वर्तते। ह्य अर्थमन्त्रालय औपचारिक कार्यक्रम आयोज्य निवेशन सम्मेलनाय नेपालेन विधातव्यस्य पूर्वकार्यस्य विषये द्विपक्षीय बहुपक्षीय व्यस्य दातृनिकाभ्यः परामर्शा गृहीताः सन्ति। निवेशन सम्मेलनस्य प्रभावकारिताया परिणामोन्मुखतायाश्च सम्बन्धे विकास सहकारीभिः विमृष्टमिति अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत अज्ञापयत्। अर्थमन्त्री डाक्टर महत अकथयत् नेपाले जलविद्युत पर्यटन सूचना प्रविधि कृषि प्रवृत्ति क्षेत्रेषु निवेशनस्य सम्भावना वर्तते। असौ अगदत् निवेशनस्य क्षेत्रे विद्यमाना समस्या निवारयितुं सर्वकारेण गभीरेण कार्याणि विद्यमानानि सन्ति। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत कथयति सर्वकार चिकित्सा शिक्षा अधिनियमस्य संशोधन प्रक्रियायां संलग्नो वर्तते। ह्यः चितवन जनपदे पत्रकारैः सह भाषमाण असौ चिकित्सा शिक्षा अधिनियमस्य संशोधनस्य विषये मन्त्री परिषदि विमृश्यमानमस्तीति अज्ञापयत्। मन्त्री बस्नेत अभासत चिकित्सा शिक्षा अधिनियमस्य विद्यमान व्यवस्था नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा समुचित रूपेण अग्रे बढ़ितुं सक्ता नास्ति। वर्तमानस्य चिकित्सा शिक्षा अधिनियम कारणेन देशे आगामिषु 5 वर्षेषु चिकित्सकानां स्वास्थ्य प्राविधिकानां च अभावस्य समस्याः सम्भावनाया दर्शनात् संशोधनं विद्यमानमस्तीति अतर्कयत्। कतार देशस्य प्रधानमन्त्रिणा शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी इत्यनेन सह परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद ह्यः एतद्देशस्य राजधान्यां दोहा स्थाने मेलवार्तां व्यदधात्। मेलवार्ताक्रमे परराष्ट्र मन्त्री साउद हमास समूहेन बन्दीकृतस्य नेपाली विद्यार्थिन विपिन जोशीन शीघ्र मुक्तये सक्रियेण प्रयत्नाय विशेषण अनुरुणत् इति मन्त्रिणा स्वकीय सचिव दीपक जोशी अज्ञापयत्। परराष्ट्र मन्त्री साउद हमास समूहेन सह कतार देशस्य सम्पर्कस्य मध्य पूर्वस्य समस्यां कतार देशेन निर्वह्यमानया सक्रिय मध्यस्थकर्तुः भूमिकायाः कतार नेपालयोर्मध्ये विद्यमानस्य गभीरस्य मित्रवत् सम्बन्धस्य च आधारेण एतस्मिन् मानवीय प्रकरणे कतार देशात् नेपालः उच्चै आशास्ते इत्यभासत। तदुत्तरे कतार देशस्य प्रधानमन्त्री अल थानी विपिन जोशी प्रभृतीनां वैदेशिक बन्दीनां मुक्तये कतार सर्वकार प्रयासरतो स्थिति अब्रवीत्।
नेपाली कांग्रेस दलस्य सभापति शेरबहादुर देउवा निगदति संघीयतया पूर्ण क्रियान्वयनम सर्वदलीय सहमत्या क्रमशः भवति। नेपाली कांग्रेस दलस्य धनुषा जनपदस्य द्वितीय क्षेत्रस्य पूर्व सभापतेः स्वर्गीयस्य राजकिशोर सिंहस्य अर्धाकृति प्रतिमां जनपदस्य औरस्थाने ह्यः अनावृण्डन सभापति देउवा जनताय महता बलिदानेन प्राप्तस्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रस्य सुदृढीकरणस्य दायित्वं राजनीतिक दलानां अस्तित्व प्रावोचत्। सभापति देउवा अगदत् नेपाली कांग्रेस दलस्य संगठन सुदृढीकरणस्य जनसेवायाश्च क्षेत्रे स्वर्गीयस्य राजकिशोर सिंहस्य योगदानं दलेन चिरकालं संस्मर्यते। नेपाली कांग्रेस दलस्य केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति उपवेश अस्यैव मार्गशीर्ष मासस्य 29 दिवसे वस्ता। मार्गशीर्ष मासस्य 29 दिवसे शुक्रवासरे दलस्य ललितपुरवर्तिनी केन्द्रीय कार्यालय उपवेक्षमाणे उपवेशे महासमिति उपवेशस्य पूर्व कार्याणां जाजरकोट भूकम्पस्य च विषययोः सामूहिक राजनीतिक विषयेषु च विमृक्षति इति मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेल असूचयत्। नेकपा एमाले दलस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भाषते सबल रूपेण देशं रक्षितुम् एकल बहुमतस्य सर्वकारः आवश्यको भवति। झोलाघाट चिवा भञ्चेङ यात्रा अन्तर्गतम् ह्यः सिन्धुपाल्चोक जनपदस्य खाडीचौर स्थाने आयोजितायां सभायां अध्यक्ष ओली सबल रूपेण देशं रक्षितुम् समृद्धं राष्ट्रं निर्मातुं च एमाले दलस्य एकल बहुमतस्य सर्वकारः आवश्यको स्थिति निश्चिनोत्। जनता समाजवादी दल नेपालेन आगामिनो माघ मासस्य 11 दिवसे सम्पत्समानस्य राष्ट्रिय सभा निर्वाचनस्य प्रयोजनाय दलं पञ्जीकारयितुं निडितमस्ति। यह दलस्य बालकुमारी वर्तिनी केन्द्रीय कार्यालय दलाध्यक्षस्य उपेन्द्र यादवस्य अध्यक्षतायां उपविष्टेन जसपा दलीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति उपवेशेन निर्वाचनयोग्य दलं पञ्जीकर्तुं निडितमस्ति। उपवेशेन राष्ट्रिय सभा निर्वाचने दलस्य पक्षतः प्रत्याशिनां चयनाय आगामिन पौष मासस्य 10 दिवसे केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति उपवेशं पुनः उपवेष्टुं च निडितमस्ति। सभामुख देवराज घिमिरे लोकतन्त्रस्य समुचिताभ्यासे विद्यमानेभ्य देशेभ्य शिक्षिता नेपालस्य वस्तुगता धारणा सदनं संसदीय समितिश्च अग्रे वर्धयितुं प्रतिबद्धतां व्यनक्ति। सप्तदश संघीय संसद सेवा दिवसस्य अवसरे ह्यः काष्ठमण्डपे आयोजितायां अन्तर्क्रियायां सभामुख घिमिरे देशस्य सर्वोच्च विधायिक्यः विशिष्ट सम्पादनतेन कार्याणि सम्पादितुं कर्मचारिणो निरदिशत्। काष्ठमण्डप महानगरपालिकया कथित स्थानानां सामुदायिक स्वसु डिस्टेम्पर नाम्नो ज्वर काश पशु संक्रामक रोगस्य दर्शनात् सचेष्टा भवितुम् अनुरुद्धं वर्तते। महानगरस्य पशुपक्षी विभागस्य प्रमुखस्य डाक्टर अवधेश झा इत्यस्यानुसारेण रोगोऽयं कुकुराणां कृते प्राणघातको मन्यते। स्वसु सहजतया संक्रमणशीला सन्नपि रोगोऽसौ सुनो मानवेषु न संक्रमति। कस्मिंश्चित् सामुदायिक सुनि एतादृशो रोगः दृष्टः सन् दूरभाषतः सम्पर्कं संस्थाप्य महानगरं ज्ञापयितुं विभागेन अनुरुद्धं वर्तते। भारतस्य सर्वोच्च न्यायालयेन जम्मू कश्मीर राज्ये आगामिन ख्रीष्टवर्षस्य सेप्टेम्बर मासस्य 30 दिवसस्य अभ्यन्तरे विधानसभा निर्वाचनं विधातुं भारतीय निर्वाचन आयोगः निर्दिष्टोऽस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन लद्दाख राज्यस्य केन्द्रशासित प्रदेशस्य रूपेण पुनर्गठनात्मको निर्णयः स्वीकृतोऽस्ति। न्यायालयेन यथाशीघ्रं राज्यं स्थापयितुं च आदिष्टं वर्तते। प्रधान न्यायाधीशस्य चन्द्रचूडस्य न्यायाधीशानां संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, बीआर गवई, सूर्यकान्तानां च सांविधानिक न्यायपीठेन एवं आदिष्टमस्ति। इति समाचारः।